बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि उदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ सहनावतु सहस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अथ पुरुषो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च तं वायुः ज्योतिरापः पृथिवी विश्वे नारायणा रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणाद्वादशादित् समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ अत नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः चक्रश्च नारायणः वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Today we are very fortunate to have the presence of Padmashri Poojya Acharya Chandanaji here in Bhavan. She is not new to Bhavan. She has already acquired a degree from Mumbai Bharatiya Vidya Bhavan. That we will know the more details when the citation is presented to her. We are all very happy, thanks to our Dilip Suranaji, who has made it possible, and our Piyush Jain, who has made it possible to get her here for about half an hour. And I will not take much of your time. I request formally to our K.G. Raghavan, Chairman of the Bharatiya Vidya Bhavan, to extend a formal welcome address. Please. We are indeed very fortunate to have your gracious presence at the Bhavan, and we are sure that with your blessings and good wishes, the activities of the Bhavan which are going on will see fruition. We are extremely grateful to you for having agreed to grace this premises with your very august presence. I do not want to take too much of time because I know we are all here eagerly awaiting to hear the blessings of Poojya Shri Acharya Chandanaji. I again heartily welcome you to the Bhavan premises. Thank you. Now it is time for us to present the citation. May I request our Vice Chairman, Sri Chinjeev Singh Ji, to please come to the dais and present our citation to Guruji. Poojya Acharya Shri Chandanaji, Poojya Sadhvigar, and respected friends, it is an honor for me to read the citation for Poojya Acharya Shri Chandanaji. Guru Arjan Dev Ji, in his great composition Sukhmani, has said, Jain Marg Sadhan Ati Sanjam. Jain Marg is the marga of great discipline, and that is personified by Poojya Acharya Shri Chandanaji. Jain Marg is from the time of the Vedas, because Lord Mahavir was the 24th Tirthankara.
and being the oldest also now in the 21st century, it is the most appropriate because in a century which is driven by violence, non-violence is a message. Aparigraha, which is the antithesis of consumerism, which is the bane of our culture. Aparigraha. And there's another thing I always say, every religion must take this lesson from Jain Math. That is the, the custom of asking for forgiveness from others and forgiving others if you have hurt anyone's feelings. Now I read the citation. Poojya Padmashri Acharya Chandanaji. Bharatiya Vidya Bhavan, Bengaluru is pleased to have your divine presence in our center on Friday, the 27th May 2022. We revere your devotion and penance, which made you the first Jain woman to receive the title of Acharya in the year 1987. Your perseverance for taking a 12-year vow of silence to study Jain scriptures and other religions is unparalleled. We are glad you have obtained the degree of Darshanacharya from Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai. By the virtue of your altruism, Veerayatan was founded to create a social transformation among the marginalized community of our society. You have provided innumerable people with education, livelihood, and service, irrespective of caste, creed, or gender. Your humanitarian work encompassing seva, shiksha, and sadhana is a benchmark for every philanthropic organization. The arduous paths you have walked to create a better society reflects in your work. Bharatiya Vidya Bhavan, Bengaluru extends its gratitude for having graced us with your august presence. Your pearls of wisdom will guide us in our path ahead. Thank you. Thank you very much. And may I request Padmashri Acharya Chandanaji to give us her blessings, Ashirvachan. और भारतीय विद्या भवन बॉम्बे से मैंने दर्शन लेकर के सिद्धांताचार्य किया था और उसके बाद वाचस्पति जहाँ रिसर्च वर्क और उस समय में ईश्वर विमर्श पर मैंने 350 पेज का
संस्कृत में आर्टिकल लिखा था। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैं ऐसा सोच रही थी मुझे संस्कृत में बोलना होगा और यहाँ के जो विद्वान होंगे वो संस्कृत में बोलते होंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम आप सब लोग हिंदी में बोल रहे हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है भारतीय विद्या भवन से, जिनके कारण मैं अपने जीवन में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और आचार्य शंकर वेदांता दर्शन, उनके उन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने का सौभाग्य मुझे मिला। उस अध्ययन के कारण ही मैंने देखा कि यद्यपि नाम भिन्न भिन्न है, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर उन तत्कालीन महापुरुषों ने समय की परिस्थिति को देखकर, समाज के वातावरण को देखकर, आवश्यकता को देखकर वहाँ उन्होंने जनता को उद्बोधन दिया। महावीर और बुद्ध के समय हिंसा की प्रचुरता थी, जातीय दुराग्रह थे। व्यवस्था एक अलग बात है कि भाई परिवार में भी एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, बिजनेस करता है, खेत में काम करता है, महिलाएं घर में काम करती हैं, व्यवस्था है। पर यह छोटा और बड़ा इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता। बच्चे पढ़ते हैं, बड़े घर में उनका ध्यान रखते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं वे ही बच्चे बड़ों का फिर ध्यान रखते हैं। तो एक व्यवस्था है, पर उस व्यवस्था का अर्थ यह नहीं होता कि परस्पर में कोई किसी को छोटा या बड़ा इस प्रकार का माने। और उस समय कुछ जातीय, कुछ एक तरह से अलगाव ज़्यादा था। और महावीर ने भी और तथागत बुद्ध ने भी मानव जाति की एक अखंडता, समानता की बात की। और उस समानता की आज अगर हम एक देखते हैं तो एक सूत्र वसुधैव कुटुंबकम, एक महान सूत्र ये उपनिषदों का है। और इतना ही नहीं, एक एगे आया, तीर्थंकर महावीर ने भी कहा कि एक आत्मा है। और एक तरह से देखा जाए कि भारतीय अध्यात्म शास्त्र केवल ईश्वर के आसपास में, ईश्वरीय शक्ति के आसपास में समस्त दर्शन शास्त्रों का विकास हुआ है। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ कृथा कस्य सिद्धनम, या अपरिग्रह का इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है। माँ कृथा कस्य सिद्धनम। और एक तरह से जिस अपरिग्रह की चर्चा तीर्थंकर महावीर ने की है, उपनिषद भी उसी बात को कहता है, उसी बात को कहता है। तो मेरी दृष्टि से प्राचीन धर्म ग्रंथों का एक स्वरूप है, एक स्वरूप है। और उस एक स्वरूप को अगर भारतवर्ष उनकी आध्यात्मिकता को एक रंग में रंग जाए तो इस जातीयता के, सांप्रदायिकता के जो मतभेद हैं वो दूर होंगे और हम एकात्मकता से जी सकेंगे। मैं आप सबकी इस उदारता के लिए कि आपने मुझे मेरे इतिहास की एक मेरी मन की स्मृति थी, मुझे भारतीय विद्या भवन के लिए अत्यंत सम्मान। वहाँ के याज्ञिक जी उस समय वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। और मैंने जब शास्त्री की परीक्षा दी, फिर आचार्य की परीक्षा दी, तो शास्त्री और आचार्य उन्हीं के निर्देशन में किया था। उन्हीं के निर्देशन में जो पंडित थे, पंडित जीवेश्वर जी, पंडित नरेंद्र झा, उन्हीं के विद्वानों के सानिध्य में मुझे अध्ययन करने का मौका मिला था। आज मुझे उन सबको इस संस्थान के माध्यम से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का आप लोगों ने जो मौका दिया, उसके लिए मैं अत्यंत अत्यंत आभारी हूँ। और क्या वो दृष्टि रही होगी के मुंशी साहब की कि जिन्होंने इस प्रकार से भारतीय वाङ्मय के अध्ययन की रुचि लोगों में बढ़े
और बॉम्बे जैसी जगह में भी उन्होंने जगह 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 संस्कृत पाठशालाएँ प्रारंभ की और कई जगह इस प्रकार से सैकड़ों विद्वान वहाँ से तैयार हो सके हैं और वो विद्वान तैयार हो सके हैं। मैं आप सबसे कहूँगी कि इस संस्कृत भाषा जो हमारी प्राचीन भाषा है, प्राकृत भाषा जो हमारी प्राचीन भाषा है, और उस भाषा में वो जो एक जीवन की ऊंचाइयाँ, जीवन की गहराइयाँ, जीवन की व्यापकता और सोच के लिए, विचार करने के लिए, ऐसा नहीं कि आया गया तत्काल में निर्णय किया, वैसे जो ऊपर इस तरह से हवा की झोंके की तरह नहीं, लेकिन गहराई के साथ में उन्होंने जीवन को समझने की और मार्गदर्शन करने की कोशिश की। हम यहाँ पर भी संस्कृत के, प्राकृत के अध्ययन के लिए, लोगों की व्यवस्था करने के लिए लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। मैं यहाँ पे बेंगलुरु में एक ऐसा ही एजुकेशन हब, मैंने केवल बॉम्बे के बाद में भारतीय विद्या भवन मैंने बेंगलुरु में सुना, और ये कोर्स यहाँ पे भी ये सेंटर चलता है। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा जब मुझे पता लगा कि बेंगलुरु में भी है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और आप लोगों ने यहाँ जो प्रयत्न किया है, मैं यहाँ पे जब एक एजुकेशन का एक तरह से सेंटर यहाँ पे बन रहा है, और अपनी कोशिश करेंगे कि बेंगलुरु से यहाँ के अध्ययनशील लोगों के द्वारा यहाँ के शिक्षित लोगों की शिक्षा सारे देश के प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक गांव में कैसे पहुँच सके, और जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं, अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था नहीं, उस व्यवस्था को बेंगलुरु किस प्रकार से पूरा कर सकता है, इस दिशा में प्रयत्न करेंगे। उस समय आज भी मैंने कहा कि हमारी प्राचीन भाषाओं के अध्ययन के लिए भी हम बेंगलुरु से ही प्रयत्न करेंगे, और सारे देश और दुनिया तक संस्कृत भाषा के अपने प्राचीन ग्रंथों की उस गरिमा को दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सबके बीच में आकर, और फिर से ये केवल आज भर का एक छोटा सा उपकरण नहीं, कि एक छोटा सा आयोजन नहीं, लेकिन इसका स्थायित्व रूप कैसे दे सकेंगे, इसके लिए भारतीय विद्या भवन बॉम्बे के साथ में, इसे विरायतन के साथ में इसी प्रकार से जुड़ करके रहेगा। और वहाँ के भी विद्वान अभी भी मेरे संपर्क में हैं, उन विद्वानों का भी हम यहाँ पे लाभ ले सकेंगे। आप सबके प्रति बहुत बहुत प्रेम आशीर्वाद। आपने जिस प्रकार से मुझे यहाँ पे सम्मानित किया है, मैं ये सारा सम्मान भारतीय विद्या भवन अपने उन अध्यापकों को, उन व्यवस्थापकों को फिर से अंतःकरणपूर्वक उनको ये सम्मान उनके ही दिव्य कर्म के लिए समर्पित कर रही हूँ। धन्यवाद। I would translate what she said. Gratitude for Bharatiya Vidya Bhavan, and she is absolutely mesmerized to remember her days when she was student at Bharatiya Vidya Bhavan. It was very challenging for her to do this degree from Bharatiya Vidya Bhavan. As you know, that Jain Sadhvijis are not allowed to write exams. They are not allowed to obtain any degrees. But she was so passionate about her studies, and she thought that studies of these ancient scriptures, actually that wisdom paves the way of future. And because of her passion and dedication towards these ancient scriptures, she chose to study from Bharatiya Vidya Bhavan. And the people, the administrators, the founders, and the other professors at Bharatiya Vidya Bhavan, they were very supportive to her to continue her studies or to complete her studies. And she is saying that today this felicitation from Bengaluru Bharatiya Vidya Bhavan is a great, great honor for her. And she is actually dedicating this entire honor to Bharatiya Vidya Bhavan across the world. Across the world. And as we know that Bharatiya Vidya Bhavan has centers everywhere. Often she comes to London, and then she managed to see beautiful center of Bharatiya Vidya Bhavan in London also. And she was very proud to see that how Bharatiya Vidya Bhavan is disseminating ancient values, cultures, music, dance, all our cultural arts to people here and to people across the globe.
So we are proud that the institution like Bharatiya Vidya Bhavan is there to value, to preserve, and to disseminate these values to the future generation. This morning only she said that this era is the era of not violence. People are not connected to each other. People are drifted from each other. These ancient values which are disseminated by Bharatiya Vidya Bhavan continuously is the future of Indian tradition, ancient values and cultures. So she is very, very thankful to all of you for organizing this program. And she is really, really very thankful for all the promoters of this ancient culture and wisdom to the world at large. So we are very lucky that you organized this program, especially to Suranaji. In her busy schedule, right from 7 o'clock till 11 o'clock, people are continuously coming. But when she came to know that I need to go to Bharatiya Vidya Bhavan, she said, that's my first priority. So that's her love for Bharatiya Vidya Bhavan. And you told everyone about her work, but that words are always limited. Acharya Ji is inviting all of you to come to her centers across the country. She is running many schools, hospitals for very downtrodden community in Bihar. And about 3.5 lakhs eye operations have been performed without any distinction of caste, creed, race or religion. About 10,000 students are studying under her leadership, and students who cannot even think to go to the doorstep of education center, they are receiving world-class education under her blessings and leadership. So words are not enough to tell you about her work. You're invited to come to Bihar, to Kutch, to Gujarat, to Nepal, where she is doing. When she went to Nepal, she was so astonished that people were speaking in Sanskrit, and she's establishing a rehabilitation center for children who lost both the parents and single parent in Nepal to instill beautiful values and cultures to children over there. So once again, thank you very much, and please come and visit the centers over there. Thank you very much. We have no adequate words to thank you for your kindness and your presence and your words. And Bharatiya Vidya Bhavan, as you know, is always thought as a world is one family, Vasudhaiva Kutumbakam. And we have always said, like a line in Rigveda, Ano Bhadra Krutavayantu Vishwatha, let noble thought comes to us from every side. So whatever the work you are doing, Bharatiya Vidya Bhavan will be always there with you, with all the centers across the country, and I'm sure you can rely on an institution which has completed 84 years in this land. And in Bengaluru, 57 years we have completed. So with your presence and blessings, we continue to do work more. And you have always known that in our logo, Amritantu Vidya has been incorporated. The knowledge is the nectar. This is how on this basis we work here. With your blessings, we work more. And thank you for your time. And now I have the pleasure of requesting our Honorable Treasurer, who is responsible for this event, to please come and propose the word of thanks. Thank you very much. Yeah, thank you, Sureshji. Padmashri Acharya Chandanaji is a beacon of social service and humanitarian beyond compare. She is fondly known as Taj Maharaj, and her devotion and perseverance made her the first Jain woman to receive the title of Acharya in the year 1987. Stories of her philanthropy and her social service are many. Innumerable souls have found help, kindness and care thanks to Acharya Chandanaji. To be in the presence of Acharya Chandanaji and her team, and to have heard her pulse of wisdom in a blessing is itself. I thank you for having graced us with this august presence today at Bhavan, Bengaluru. I also thank Chairman of Bharatiya Vidya Bhavan, Shri K.G. Raghavanji, for having welcomed us all in his erudite way.
Also, I would like to thank Mr. Dilip Surana, Vice Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan, to have initiated this get-together today. And also Sri H.N. Sureshji and his team for having arranged this event in a very short notice. I thank you, the Kendra committee members and devotees, for having gathered here today to seek the blessings of Padmashri Acharya Chandanaji. Thank you once again. And with this, thank you all for being present with a short notice, and pranams to all of you. Namaste. Now with this, we close today's meeting. Thank you.